Hello everyone. In this short video, we'll cover the NEET paper 2023. So the first question was the assertion region. So the assertion is the first stage of gametophyte in the life cycle of moss is protonema stage, and the reason given is protonema develops directly from spore produced in capsule. So in this we have to choose the right answer. Uh, तो प्रोटोनिमा जो है गमेटोफिटिक स्टेज लाइफ मॉस का जो है वो नहीं होता है, स्पोर से डेवलप भी नहीं होता है, मींस ए जो है प्रोटोन गैमेटोफिटिक स्टेज जो है लाइफ साइकिल मॉस की प्रोटोनिमा स्टेज होता है, ये सही है, ए सही है, बट आर जो है वो गलत है। तो इसका आंसर जो है ए करेक्ट एंड आंसर जो होगा दैट इज थर्ड वन। So the next question is cellulose does not form blue color from with iodine because iodine के साथ cellulose जो होता है वो कोई color produce नहीं करता, क्योंकि it does not contain helix and hence cannot hold molecule. The answer is D. So next is which micronutrients is required for splitting of water molecule during photosynthesis. We all know that magnesium is required for photosynthesis. And then next question is expressed sequence tag refers to, it refers to all the genes all the genes that are expressed as RNA. Okay, so next question is thickness of ozone in a column of air, a column of air in the atmosphere is measured in terms of डॉप्शन यूनिट। इसकी यूनिट ओजोन को मेजर करने की जो यूनिट है ओजोन लेयर को, उसको डॉप्शन में हम मेजर करते हैं। So the next question is further the assertion reason ATP is used at two step in glycolysis. ये तो सही है, it is correct. ग्लाइकोलाइसिस का पाथवे अगर आपको पता हो, ग्लाइकोलाइसिस में जो ग्लूकोज से ग्लूकोज 6 फॉस्फेट बनता है एंड फ्रक्टोज फ्रक्टोज 1 6 से फ्रक्टोज 1 6 से फ्रक्टोज 1 1 6 डाईफॉस्फेट जो बनता है, यहाँ पे तो टू स्टेप पे एटीपी यूज होता है। The first ATP is used in converting glucose into glucose 6-phosphate, and the second ATP is conversion of fructose. So this is complete correct. So both the A second answer होगा इसका। So next is upon exposure to UV radiation, DNA stained with ethidium bromide will show, it shows the orange color, bright orange color। जो DNA हमें दिखता है UV में 260 UV रेंज जो होता है उसमें डीएनए हमें ऑरेंज कलर का दिखेगा, बैंड जो होंगे डीएनए के ऐसे ऑरेंज कलर के दिखते हैं। सो नेक्स्ट इज अमंग द इविल कॉटलेट विच वन इज कंसिडर्ड द मोस्ट इम्पॉर्टेंट काज ड्राइविंग एक्सटेंशन ऑफ स्पीसीज। So the answer would be I up to my knowledge, the habitat loss and the fragmentation. So which of the following which of the following stages of the meiosis centriole involves division of centromere? So centromere का division जो है division जो होगा meiosis के केस में पूछ रहा है, तो that is I think metaphase 2. So next is which hormone produce internode and petiole elongation in the deep water rise? So this is the ethylene. So frequency of recombination between gene pair on same chromosome as a measure of distance between gene to map their position on the chromosome was used for first time by, this is Albert D is answer, Albert Sutwant. Sutwant. So next is how many ATP and NADPH NADPH2 are required for the synthesis of one molecule of glucose
during Kelvin cycle? So it is very easy question. 12 uh, 18 ATP, C is answer. 18 ATP and 12 NADPH2. So next is which is the role of DNA polymerase III in the process of transcription in eukaryotes? So this is the answer is 3 only, tRNA 5, sRNA and snRNA. So next question is 115. Family Fabaceae differ from Solanaceae and Liliaceae with respect to stamens. Pick up the characteristic feature. Let's uh, pick up the characteristic feature. The family Fabaceae, but not found in Solanacea or Liliaceae. मीन्स फेबेसी का करेक्टरिस्टिक बताना है जो कि सोलोनेसी और लिलियेसी में प्रेजेंट नहीं होते हैं. Most probably the answer would be third. I'm not sure about this answer. So we'll clear it in the I will clear it later. So the next question is which the process of appearance of recombination nodules uh, occurs at which substage of prophase 1 in meiosis? Recombination occurs in recombination means crossing over. That is packeting. So this is the in the equation GPP minus R is equal to NPP. R is like respiration loss. This is the question of ecology. The reaction center in PS2 has absorption maximum at this is 3680. Unequivocal unequivocal proof that DNA is genetic material was first proposed by that is Hassel and Marchese. What he did, इन्होंने इसमें क्या किया था, इन्होंने डीएनए को फॉस्फेट से मीन्स रेडियो लेबल किया, डीएनए को लेबल कर दिया और आरएनए प्रोटीन कोड जो था बैक्टीरियोफेज का उसको भी कोड कर दिया, उसमें सल्फर को कोड कर दिया. और जब ये इन्फेक्ट करते हैं बैक्टीरिया को, जब बैक्टीरिया को वो इन्फेक्ट करेंगे तो जब डीएनए जाएगा इसमें, एक डीएनए और दूसरे में जो डीएनए लेबल था उसको उससे इन्फेक्ट किया और जिसमें प्रोटीन लेबल थे उससे इन्फेक्ट किया. तो सिर्फ इसका प्रोटीन लेबल्ड है और जब इन्फेक्शन करेंगे तो इन्होंने ये देखा कि जो डीएनए है वो जो है इसका जो डीएनए है वो यहाँ आ गया, बट इसका जो प्रोटीन है वो यहाँ पे प्रेजेंट नहीं है, प्रोटीन प्रेजेंट नहीं है, लेकिन इसका डीएनए इसमें आ गया है. तो इन्होंने इससे प्रूव कर दिया था कि ये जो भी ट्रांसफर होता है वो जेनेटिक मटेरियल जो है डीएनए है. ओके, द आंसर इज सी. Okay, so the next question, spraying of which of the following phytohormone on the juvenile conifers help in hastening the maturity period that lead to early seed production? The answer is C, gibberellic acid. So which is the function of tassel in the corn cob? To attract the pollen grain, to trap the pollen grain. The answer is third. So during the purification process for recombinant DNA technology, addition of chilled ethanol precipitate out DNA. Answer is C, DNA. So in angiosperm is haploid, diploid and triploid structure of a fertilized embryo sac sequentially are. एंजियोस्पर्म में हैप्लॉइड क्या होगा, जो पहले तो ट्रिप्लॉइड क्या होता है, ट्रिप्लॉइड जो प्राइमरी एंडोस्पर्म्स होते हैं. तो एंडोस्पर्म्स ट्रिप्लॉइड एंडोस्पर्म्स है, तो इसमें ये देखें थर्ड पे ये है, तो दोनों में से कोई एक आंसर होगा. एंटीपोड्स, तो हैप्लॉइड जो होगा सिनर्जिक 2n. तो द आंसर इज D मीन्स 4, क्योंकि
ये सिनर्जिड एंड एंटीपोडल टू हैप्लॉइड होते हैं। जाइगोट जो होगा 2n होगा, 2n एंड दो एंड दो एंडोस्पर्म वुड बी 3n। एक रट्टा स्टिक होता है एंजियोस्पर्म का, ट्रिप्लॉइड एंडोस्पर्म प्रेजेंट होते हैं। ये जिम्नोस्पर्म में जो होते हैं, जिम्नोस्पर्म में अगर आपको पता हो, जिम्नोस्पर्म में n होता है। इससे रिलेटेड क्वेश्चंस काफी पूछे जाते हैं। इसमें भी पूछते हैं कि अगर क्रोमोसोम नंबर इतना है, मान लीजिए क्रोमोसोम नंबर एक प्लांट में क्रोमोसोम नंबर जो है मीन्स 2n क्रोमोसोम जो है 20 है, तो जो एंडोस्पर्म है उसमें कितने क्रोमोसोम होंगे, दैट वुड बी 10। इस तरह क्वेश्चंस भी आते हैं। लार्ज कलरफुल pregnant flower with nectar are seen in। तो जो इंसेक्ट होते हैं उनके केस में, जो पॉलिनेशन इंसेक्ट के द्वारा होते हैं उनके वो कलर्ड, मतलब वो अट्रैक्ट होते हैं कलर से, फ्रेगनेंस से और नेक्टर से, ताकि वो वहाँ पहुँच सके और उनका पॉलिनेशन हो सके। So next question is, in tissue culture experiment, leaf mesophyll cells are put in culture media to form callus। मीन्स वो प्लांट का कोई प्रोडक्ट, कोई पार्ट उठा लेते हैं जिसको हम एक्सप्लांट कहते हैं, और इसको हम मीडिया प्रोवाइड करते हैं, मीडिया में डाल देते हैं ताकि ये ग्रो करे। तो ये कैसे ग्रो करके एक प्लांट के फॉर्म में, पूरा प्लांट के फॉर्म में आ जाता है। दिस इज ड्यू टू प्रेजेंस लाइक, दिस इज फर्स्ट इट हैपेंस द डी डिफ्रेंसिएशन। मीन्स पहले वो एक्सप्लांट जो है पहले डी डिफ्रेंशिएट होता है, फिर उसके बाद री डिफ्रेंशिएट होता है। दिस इज द प्रोसेस ऑफ फॉर्मेशन। सो द आंसर इज थर्ड। So coming to the next question, so the next coming in this question, session is again the force generated by transpiration can lift xylem site column of water over 130-meter height, and transpiration cools leaf surface sometime 10 to 15 degree by evaporative cooling। तो का आंसर मुझे थोड़ा सा कंफ्यूजिंग लग रहा है, but most probably the answer would be both are correct, I think both are correct. Okay, we'll check later. The historic conversion of biological diversity, the Earth Summit, um, was held in Rio de Janeiro in year. It is happened in 1992. So in gene gun method used to introduce alien DNA into host cell, microparticles of metals are used, gold और टंगस्टन। हम गोल्ड यूज करते हैं, गोल्ड पार्टिकल्स, और टंगस्टन यूज करते हैं। मीन्स किसी भी ऑर्गेनिज्म में हमें अगर ट्रांसफर करना है जीन, मान लीजिए ये माइस है, माइस में हमें ट्रांसफर करना है DNA को, तो हम माइक्रो इंजेक्शन के थ्रू इसके ओवरी में कर सकते हैं, और उसमें गोल्ड पार्टिकल्स होते हैं, गोल्ड पार्टिकल का बॉम्बार्डमेंट होता है और जो भी DNA होता है उससे अटैच होता है। Movement and accumulation of iron across a membrane unless their concentration gradient can be explained by this is due to active transport. Exile presentation is, so this is the third one। exile presentation के बारे में पूछ रहा है, sorry no, the first one, this is wrong। चाइना रोज, प्यूटेनिया एंड लेमन, इसमें एक्साइल प्रेजेंटेशन होता है। So the next is, I think the video is going to be long, so this is our last question। Identify the correct statement। So um, Detritus perform fragmentation, humus is further degraded by some microbe during mineralization, water water soluble inorganic nutrients go down in the soil and get precipitated by process called leaching। This is true। The So I think we have multiple option answer. The detritus food chain begin from living
ये गलत है, it is not correct. So earthworm break down detritus into small particles by a process called catabolism. No, it is not like that. So, so the answer would be first one is correct, second is correct, third is correct. So the answer is ABC. Second answer होगा. So among eukaryotes, replication of DNA take place. It takes place in S phase. The third answer होगा. So first next is next question is like the phenomena of pleiotropism refers to more than two genes, a single gene affecting multiple phenotypic expression. ये होता है प्लियोट्रॉपी का मीन मतलब एक जीन जो है जीन जो वन जीन but it shows many phenotype in different conditions. That is pleiotropism. It by the pair of heterosporous pteridophytes among the following. So the answer would be Legionella and Salvinia. This is heterosporous. So next is late wood has fewer geleric elements with narrow vessels. This is true. Cambium is less active. ये भी true है. That's why winter के time में रहता तो both are true. And correct explanation है. तो second हो जाएगा. So coming to the next question. We have to identify the correct answer. Lenticel are the lens cell shaped opening permitting the exchange of gases. Bark formed early in the season is called hard. Uh, Bark formed early in the season is called hard bark. Bark is technical term that refers to all tissues related to vascular cambium. This is true. Bark refers to periderm and secondary phloem. This is true. And phloem single layered in thickness. No. I think C and D. C only no, B and C. Answer is A. So मैचिंग आ गया है. एम फेज में क्या होता है? एम फेज इज equational division. Proteins are synthesized. This is G1 inactive phase. Quiescent phase जो है inactive phase है. Quiescent phase is inactive phase. तो इसका सेकेंड हो गया. M phase is interval between mitosis and initiation of DNA replication. We can say yes. No, sorry. This is fourth. Equal division होता है. And proteins are synthesized. This is one. So and the B is third one. So the option would be first is 4. तो इसमें आ रहा है we have एक इसमें से आंसर हो सकते हैं. So next is M quiescent phase is inactive phase. C का second होगा. So the answer is 4. So it's too long with so it's the next is in gymnosperm the pollen grains are released from the microsporangium and carried by the air current. Air current carry the pollen grain to the mouth of Archegonia where the male gametes are discharged. Pollen grain is not formed. Pollen grain is formed actually. Pollen grain के ही through Archegonia जो यहाँ पे present होता है. यहाँ पे pollen grain present micropolar end पे आता है. माइक्रोपोलर एंड पे और इससे फ्यूज करता है जो भी फॉर्म होता है. तो बी ये गलत हो गया है. तो A is true but R is false. So coming to the next. Molybdenum is iron is
Zinc is required for oxygen, and molybdenum is required for the nitrate, means nitrogen fixation. तो हम इसे चेक कर लेते हैं कि क्या आंसर हो सकता है. जिंक इज फर्स्ट, सेकंड का फर्स्ट, सो द आंसर आई गॉट द फोर्थ इन दिस वे. सो कीमो ऑस्मोसिस पूछ रहा है, विच इज द फॉलोइंग कॉम्बिनेशन रिक्वायर्ड फॉर कीमो ऑस्मोसिस. कीमो ऑस्मोसिस में क्या होता है, एटीपी सिंथेसिस जिससे होता है उसको कीमो ऑस्मोसिस कहते हैं. उसमें हमें क्या क्या चाहिए होता है, एक तो मेम्ब्रेन होना चाहिए, प्रोटॉन पंप होना चाहिए, प्रोटॉन ग्रेडियंट होना चाहिए, और एटीपी सिंथेज होना चाहिए. सो द आंसर इज बी. वो जो अगर हम माइटोकॉन्ड्रिया बनाएं तो इस पे तो मेम्ब्रेन होना चाहिए, मेम्ब्रेन में ही और प्रोटॉन ग्रेडियंट बन जाता है, और एटीपीएज इस पे होता है, इसके थ्रू ही एक प्लस बाहर निकलते हैं और एटीपी का फॉर्मेशन होता है. जो ग्रेडियंट होता है वो एक एनर्जी, प्रोटॉन ग्रेडियंट की वजह से एनर्जी एनर्जी मीन्स एटीपी फॉर्मेशन होता है. So the main steps in the formation of recombinant DNA are given. Arrange these steps in sequence. So I think first would be the isolation, the C, then cutting it specific DNA हमने पहले आइसोलेट कर लिया जो भी हमारा डिजायर्ड डीएनए है, फिर उसमें हम कट लगाएंगे ताकि हम यहाँ पे इंसर्शन कर पाए. फिर इंसर्शन होगा सी बी, इंसर्शन. सो डी कि पहले हम डीएनए आइसोलेट करते हैं, फिर इसमें हम इसको कट कर देते हैं, फिर जो डिजायर डीएनए है उसमें हम इंसर्ट कर देंगे. इंसर्ट करने के बाद इंसर्ट कर देंगे, इंसर्ट कर दिया, और फिर इस डीएनए को हम बैक्टीरिया में ट्रांसफॉर्म कर देते हैं, इस डीएनए को. तो ये जो प्रोसेस है वो इससे हम डिजायर डीएनए को इंसर्ट कर सकते हैं. द आंसर वुड बी 4. So next is, which of one of the following statement is not correct? The amount of some toxic substances, some toxic substances of the industrial waste water increase in the organism at successive tropical level. This is true. So the microorganisms involved in biodegradation of organic matter in a sewage populate water body, consume a lot of oxygen, causing death of aquatic organism. This is also true. A algal bloom caused by the excess of organic matter in water improve water quality. No, it's degrading the water quality, and that is called BOD. जैसे कि हम मेजर करते हैं, पता करते हैं कि वाटर जो है कितना पॉपुलेटेड है. ब्यूटिजन बायोलॉजिकल ऑक्सीजन, डिजॉल्व ऑक्सीजन को बोलते हैं बीओडी. तो द आंसर वुड बी थर्ड. थर्ड आंसर हो जाएगा इसका. तो नेक्स्ट, कमिंग टू द नेक्स्ट, which of the following statements are correct about Klinefelter syndrome? So such a discovered by Langdon Down, such an organism has overall masculine development, however feminine also present. ये सही है. And the effect in the sort, no. Physical, psychomotor and mental development is retarded, sterile. This is B and E. So the answer is fourth one, 4. So next is match करना है mutualism and commensalism, amensalism and parasitism. So mutualism में both positive, फर्स्ट का 4, तो फर्स्ट का 4. ओके, तो ये 3 आंसर है इसमें. और कॉमेंसलिज्म में प्लस एंड 0,
फर्स्ट कमेंसिज्म का फर्स्ट हो जाएगा, बी का फर्स्ट, so we got the answer third. Emancipism is negative and zero, थर्ड का सेकंड, यस थर्ड का सेकंड, एंड पैरासिटम में दोनों ही नेगेटिव होंगे, वेयर इज दैट, डी इज थ्री, पॉजिटिव कैसे हो सकता है, नो इट इज नॉट करेक्ट, यस द आंसर इज लाइक पैरासिटम में क्या होगा, एक पॉजिटिव होगा और एक नेगेटिव होगा, तो दैट इज थर्ड, so the answer is 3. So next is flower is defined as modified shoot where the shoot apical meristem change to floral meristem. That is true. Yes, this is true. Internode of the shoot gets condensed to produce different flower. ये भी सही है. So the answer is both are uh, true and correct explanation है. The answer is second. So how many different proteins does ribosome consist of? That is, I think, 60. So coming to the next, so cohesion, guttation, surface tension, adhesion. So surface guttation is more attraction to, guttation is third, loss of water in liquid form. So first we check D का third, so दो आंसर आ गए हमारे पास. So next is surface tension, attract towards polar surface, a mutual attraction among water molecules. Cohesion is B second होगा, more attraction to liquid phase, surface tension, so A would be second, तो ये भी दो है. So B surface tension is, so the answer would be A. Surface tension would be more attraction in liquid phase, and adhesion would be attraction towards polar surfaces. So coming to the next question, फिर से मैच करना है, तो ऑक्सीडेटिव डिकार्बोक्सिलेशन जो है उसमें वो इसमें सेकेंड आंसर होगा, पायरुवेज डिकार्बोक्सिलेज डिहाइड्रोजिनेज जो होता है उसके उसमें होता है, पायरुवेट से जब ये एसिटाइल कोएंजाइम बनाएगा, एसिटाइल कोएंजाइम, तो इसमें डिकार्बोक्सिलेशन होता है. तो दिस इज सेकेंड, फर्स्ट इज सेकेंड, सो फर्स्ट एंड थर्ड आंसर में से कोई एक होगा. तो ग्लाइकोलिसिस में, ग्लाइकोलिसिस को एएमपीएम कहते हैं, तो बी इज फोर, बी इज फोर, ओके. So oxidative phosphorylation is electron transport system जिसमें कि ATP formation होगा. C is third, C is third. So answer is first one. So next, melonate inhibit the growth of pathogenic bacteria by inhibiting the activity of सक्सिनेल डिहाइड्रोजिनेज. ये जो है माइटोकांड्रिया का कैरेक्टरिस्टिक एंजाइम भी कहलाता है, माइटोकांड्रिया में प्रेजेंट होता है. और सक्सिनेट जो है, सक्सिनेट का एक इनिबिटर है जिसको हम मिलोनेट कहते हैं. So this is assertion reason. Gauss competitive exclusion principle state that two closely related species competing for the same resource cannot coexist indefinitely and competitively. Inferior one will eliminate eventually. This is true. In general, carnivores are more adversely affected than the competitive than herbivores. I think this is also so, but true, but it is not great like true explanation. So the answer would be A is true and B is also true. I think I am confused little bit. Since the second and third से answer होगा. It's most probably the second one. So next is,
So it's coming to the zoology. So this will I will discuss this in the next video. So thank you for watching, and please like, share, subscribe the channel so that everyone can make their NEET biology, botany subjects. So thank you guys. Thank you for watching.